My father has around 9 acres of land. कुछ पेंशन आती है, एक फार्म हाउस है एंड ही हैज़ अ ओल्ड कार। यूकलिप्टस के कुछ पेड़ हैं, इतने बड़े कि अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखो, द स्काई ऑलमोस्ट डिसअपियर्स। लेमन ट्रीज हैं, which are so full of fruit that they look like they are offering something to you. He built all this himself. अकेले सेव करके धीरे धीरे he made all this possible. And I, his son, have a home in the city, a decent life, 2 kids who would love having their grandfather around. मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा साथ रहें हमारे. I always have wanted this. So one day I asked him, पापा, come live with us. हमारे साथ रहो, आप अकेले क्यों रहते हो? He didn't think even for a second. He said, वहाँ आके क्या करूँगा? तुम दोनों काम पे जाओगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं घर में क्या करूँगा? टीवी देखूँगा, सोता रहूँगा. ये तो मेरी फेल्ड लाइफ होगी. A man who built everything with his own hands, who is living alone in the village, looked at the comfortable city life that I was offering him and called it a failed life. And I, standing there, had no answer. मेरे पापा रोज सुबह 3:30 बजे उठते हैं. No alarm, no meeting, no reason that we city people would understand. वो उठते हैं, नहाते हैं, ग्रीन टी बनाते हैं, 15 मिनट एक्सरसाइज करके he goes for meditation and he spends around 1 to 2 hours in his meditation. 2 घंटे. जब तक मैं उठता हूँ, अपने फ़ोन की फर्स्ट नोटिफिकेशन देख रहा होता हूँ, he has already 2 hours of productive time. No screen, no news, just him and his breath. After that, he goes for a walk, newspaper, explaining the day's work to the farm labor. Then he walks in his own fields. अपने नींबू के पौधों को देखते हैं, यूकलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ों को देखते हैं. Goes in the vermicompost shed that he has built. Afternoon में he takes a little nap, evening chai, then goes for a walk, and again he spends time in his meditation. Again, 1 to 2 hours. Just him and his thoughts. रात 10 बजे सो जाते हैं. This is his one day. Every day. No boss, no deadline, no performance review. There is a Japanese concept, ikigai. It means your reason for waking up. The thing that makes getting out of bed feel natural. Not forced, not obligatory, just right. Philosophers ने इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं. Researchers ने बहुत स्टडी की है. People attend expensive retreats trying to find it. मेरे पापा ने ये वर्ड कभी सुना भी नहीं होगा. And yet, वो सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं. Every single day. Is this man retired? Or is he actually living? जब भी मैं वहाँ पहुँचता हूँ, it feels a different world. हमारा फार्म हाउस जो उन्होंने खुद बनवाया, surrounded by greenery on every side, पहाड़ियों की तराई में, and he alone in the middle of all this. 2020, COVID आया. The whole world was locked down. News channels पे numbers, mask, sanitizer, social distancing, 2 गज दूरी. And I, being a responsible son, called him. मैं उनको छोटी छोटी बातें समझा रहा था. Do's and don'ts. कहीं मत जाना. Don't meet people. Wear a mask. Wash your hands. मैं बोल रहा था, explaining like a very informed, very anxious person. And he completely calm, completely unbothered, said, अरे ये कोविड तुम्हारे शहर में है, यहाँ तो गांव में आराम से मैं अपने फार्म में घूमता हूँ. यहाँ ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है. तुम लोग बंद हो अपने 250 स्क्वायर यार्ड के घरों में. मैं फ्री हूँ.
I was on the phone in my house in the city, responsible, informed, anxious. And my father, बिना ब्रेकिंग न्यूज़ के, बिना सैनिटाइजर के, बिना किसी एंजाइटी के, he was walking freely through his farms. He was right, I was wrong. मैं चाहता हूँ कि आप एक सेकंड के लिए रुको. Imagine अगर आपको चूज करना हो, the city, your career, your familiar busy life, the notifications, the meetings, the weekend plans, the sense of always moving forward, और वो farm house, those trees, that silence, वो 3:30-4 बजे वाली stillness, that freedom of knowing exactly what your day is for. Honestly, which one would you choose? And more importantly, why does the question makes us uncomfortable? मैं काफी बार सोचता हूँ, what does this man have that we don't? पैसा he has, but does money automatically gives us peace? Land, he has that too, but जमीन से सुकून नहीं मिलता on its own. तो फिर क्या है उनके पास? And one day, watching his routine, I understood. He knows what he wants. इतना simple, इतना rare. In the city, हमें इतने ज़्यादा options में मिलते हैं, हम उनमें खो जाते हैं. We never actually ask ourselves, what do I actually want? Not what I have been told to want. Not what looks good. Not what makes sense on paper. What I actually want. मेरे पापा को बस ये क्लैरिटी है. He knows what he needs. City नहीं चाहिए. Life of TV and sofa नहीं चाहिए. किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए. अपने खेत, अपनी मॉर्निंग्स, his own silence. बस ये चाहिए. 70 साल की उम्र में रिलेटिवली हेल्दी, सॉल्ट एंड पेपर वाला हेयर स्टाइल जो उन्होंने कभी डाई नहीं किए. लाइक ही डिसाइडेड लॉन्ग अगो कि मैं वही दिखूंगा जैसा मैं हूं. टू मी ही अपीयर्स मोर अलाइव देन मोस्ट पीपल आई नो. वी स्पेंड आवर एंटायर लाइव्स ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट अ सक्सेसफुल लाइफ लुक्स लाइक. बड़ा घर, अच्छी कार, फॉरेन ट्रिप, प्रमोशन, a life that looks good on Instagram. But my father, without any philosophy class, without any self-help book, found what we keep googling: purpose. वो सुबह 3:30 बजे इसलिए नहीं उठते हैं कि किसी ने बोला है. He wakes up because it feels right to him. He meditates because he wants stillness. अपने खेतों में इसलिए चलते हैं because that land is his own. He has nothing to prove, no one to impress, no one to perform for. बस रहना है on his own land, on his own terms. मैं आपको नहीं कह रहा leave the city. I'm not saying give up everything and go live on a farm. मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ. What is your answer? वो काम क्या है जो आपको सुबह उठने की वजह देता है? वो जगह जहाँ आप without any performance, without any role, feel completely free. वो चीज़ जो सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं. मेरे पापा को पता है उनका जवाब. Do you know yours? द क्वाइट बालकनी पे हम ऐसे ही सवाल पूछते हैं. We don't give answers, बस सवाल. Because the right question कभी कभी find its own way home. अगर आज की बात में कुछ छुआ तो नीचे कमेंट्स में बताओ. आपकी जिंदगी में वो इंसान कौन है who has less on paper but always seem more alive? आओ थोड़ी देर बालकनी पे बैठते हैं और सोचते हैं.